अस्सलाम वालेकुम। और मैं कहना तो चाहती थी गुड मॉर्निंग, लेकिन पिछला सेशन इतना लंबा चला कि अब मैं आपको गुड आफ्टरनून कहूँगी. I noticed there are people who may not understand Urdu, so I should keep this bilingual. बहुत शुक्रिया मेरी दोस्त आसमा जहांगीर के सिलसिले में सालाना annual memorial conference. For me, it is not just an honor and a privilege to be invited to be a speaker here. It is also a very emotional moment for me, because while Pakistan lost and the whole world lost an icon, I lost a very dear friend. So, मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है. There are two experts who are technical experts in addition to being population and demography experts and medical experts. लिहाजा मैं अपने आप को महदूद करूँगी non-technical aspects. मौजू जो है जो कॉन्फ्रेंस के लिए दिया गया है वो बहुत वास्ट है. It's like a lot of things all rolled into 1 hour and now perhaps just 50 minutes. Population, family planning, women's reproductive issues. ये बहुत ही एक भरपूर और वास्ट एक सब्जेक्ट है. लिहाजा मुमकिन नहीं है कि तीनों मौज़ूआत पर गुफ्तगू की जाए. मैं अपने आप को महदूद करूँगी women's reproductive rights, sexual and reproductive health aspects, public policy, government and state views on the subject. मैं इस तरफ जाऊंगी ताकि हमारे जो दो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं वो फिर आपके साथ टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे डिस्कस करें. यहाँ पे कहा गया maternal mortality ratio is 189 over 100 per 100,000 live births. Or I'm not sure what Dr. Farooq Zaman and Dr. Zeba Sattar think about it, but in my view, it's an underestimation. So perhaps they'll be able to answer that. आप लोगों में से हाथ उठाइएगा कितने लोगों को मालूम है कि पाकिस्तान में औरतें कितनी हैं. I like a show of hands as to the population of women in Pakistan. अफसोसनाक बात है. It is a matter of sorrow and grief and shame for Pakistan that we are 48.8% of the population, contrary to the global norm with the exception of China and India, perhaps Nepal, where women outnumber men in the whole world, except in this part of the world. और पाकिस्तान में 48.8%. और ये आज से नहीं, ये 1981 के सेंसस से चलता चला आ रहा है. इस पर मुझे मोहतरमा सारा मलकानी साहिबा ने कहा था कि एक सब participants will bring one resolution or recommendation, and so my recommendation is going to be on this aspect. Introductory remarks में आपने जिक्र किया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट 1994 कायरो. डॉक्टर नफीस सादिक उस वक्त एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थी यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड की, और उस वक्त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर थी, और बहुत उम्दा स्पीचेस वहाँ पर की गई. एंड पाकिस्तान मेड कमिटमेंट्स not just to reproductive health, but to sexual and reproductive rights of women and men and transgenders. और साथ साथ ना सिर्फ ये कि फैमिली प्लानिंग पर, लेकिन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट पे बहुत जोर दिया गया. Women's empowerment was focused on. The right to a safe abortion was focused on. Economic development, poverty reduction, environment and climate change, हर तरह की linkages बनाई गई थी ICPD Cairo में. And do you know that Pakistan committed to each and every one of these without reservation?
और ये 1994 की बात है. 1995 में बीजिंग 4th World Women's Conference हुई थी. And again, the state of Pakistan made unreserved commitments. वो तो 1996 में साइन किया था, जी किया था, but that was not unreserved. उसमें 2 reservations थी. We won't. This is not the subject, and I certainly don't have the time to go into it. But we can talk about it later if you like. Gender focused budgeting, gender resource budgeting पर भी जिक्र किया गया. बहुत सारा कुछ कहा गया. That was like, 3 decades ago almost. लेकिन commitments are worth only the signature on the paper that you sign them on. मुझे याद है कि 1994 में it was not just the ICPD Cairo, there was also bringing religious scholars on board. Not just Muslim religious scholars, but Catholics and Christians, all sorts of religious scholars came on board and decided that family planning, population, reproductive and sexual health and rights were very much part of all religions of the world, except, of course, the Catholics don't believe in abortion and contraception, but that's not our subject today. और उन्होंने एक declaration sign की थी just before the Cairo conference started. Today, I brought with me a report to show you, but now that we are running late, there's no time to show it. एक fundamentalist, orthodox, conservative discourse शुरू हो चुका है, या तक़वियत ले रहा है. There's an increased move to the right in countries like Pakistan. However, when we look at the region, we look at Iran, which is a theocratic state, and it's a Muslim theocratic state, it's a Shia theocratic state. We need to ask ourselves, why are they doing better than us? क्या वजूहात है कि वो हमसे बेहतर जा रहे हैं? Reproductive health, reproductive rights. I know what is happening in Iran about the hijab and Masa Amini. 2018 में एक constitutional amendment आई जो कि 18th constitutional amendment थी. And that is a very, very important milestone in Pakistan's constitutional history, because it's also known Urf-e-Aam mein, the devolution amendment, the provincial autonomy amendment. लेकिन अंग्रेजी ज़बान का एक मुहावरा है, and I'll say it in English, and then if you want I can translate it into Urdu. Don't throw the baby out with the bathwater. And we've done that. We got rid of the Federal Ministry of Population. We've got health, whatever that means. Don't tell me सेहत, health का मतलब सेहत होता है, मुझे मालूम है, लेकिन मैं population की बात कर रही हूँ. So now there's no one looking after population. The health ministry doesn't own it, no ownership. The provinces fight for turf between the departments of population welfare and the departments of health. And they've been doing that for the last 40 or 50 years. So, नया क्या है? तब्दीली किधर है? नया पाकिस्तान किधर है? SRHR, Sexual and Reproductive Health and Rights. पाकिस्तान में फैमिली प्लानिंग तो शायद रह गई हो कहीं कहीं, कभी कभी. ना सेक्शुअल हेल्थ एंड राइट्स, ना रिप्रोडक्टिव राइट्स. तो बस हेल्थ ही कहीं शायद हो. टैबू हो चुका है ये सब कुछ. हम बहबूद आबादी की बात करते हैं, पॉपुलेशन वेलफेयर की बात करते हैं. वेयर इज़ द राइट्स? और हम औरतों पर फोकस करते हैं. Population and planned parenthood is parenthood. Where are the men
in the family planning program of Pakistan? Where are the media? Where are the news and current affairs and entertainment, the dramas, the concerts, the sports? डॉक्टर सत्तार मेंबर वो बताएंगे आपको, वो मेंबर हैं सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट की बहुत सारी बहुत हाई लेवल किस्म की थिंक टैंक्स में. तो हम पूछते हैं कि आप तो अपनी रिकमेंडेशंस देती चली जा रही हैं डॉक्टर साहिबा, उनका बन क्या रहा है? वेयर इज़ द ओनरशिप ऑफ ऑल ऑफ दैट विद इन सक्सेसिव? और मैं यहाँ किसी एक हुकूमत का नाम नहीं लूँगी, क्योंकि मिलिट्री हुकूमत हो या सिविलियन, राइट विंग हो, लेफ्ट विंग हो, सेंटर हो, कोई भी हो, A to Z parties, nobody has really owned population in the last 30 odd years to the extent that it needs to be owned and taken and adhered. The commitments must be adhered to. आखिर में मैं अपनी recommendation पेश करूँगी आपकी हिदायत और instructions के मुताबिक, and my recommendation is very simple, very small, very doable, baby steps. इस साल सेंसस होगा. एक पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, किसी ज़माने में एक पॉपुलेशन सेंसस ऑर्गेनाइजेशन कहलाता था एक चीज़, have already done a pilot test, small level exercise. तो जब PBS पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के साथ मीटिंग हुई पिछले हफ्ते, they accepted the fact that the 2017 census is problematic, has issues, especially issues of under-enumeration. गिनती कम हुई है, हम जितने हैं वो नज़र नहीं आते 2017. और बाय द वे, बराए करम इसको मर्दमशुमारी मत कहिएगा, क्योंकि फ़ारसी में मर्दमशुमारी मर्दों को काउंट करने को कहते हैं. मैं मजबूर ना करें मुझे कि मैं ख़ातून शुमारी या ख़ानुम शुमारी का मुतालबा करूं. सो लेट्स कॉल इट इफ़राद शुमारी. इफ़राद शुमारी, ठीक है, ठीक है, इफ़राद शुमारी. मेरी रिकमेंडेशन है, contrary to the objections raised by the Pakistan Bureau of Statistics just last week in an interministerial meeting, when I recommended and requested das basta कि प्लीज़ आप एक औरत को ले आए एनुमरेटर्स के साथ, एक टीम बना लें ताकि वो घरों के cultural constraints of parda, especially in the rural areas, do not permit men to enter homes to verify. अगर मर्द बाहर so-called head of household अगर कह रहा है कि I'm the head of the household, I have 5 sons and 2 daughters and 1 wife. And actually there are 4 wives and 10 daughters. But they're not being enumerated. So मैंने request की थी PBS के बहुत senior level से कि जी please आप एक खातून को हर मेल एनुमरेटर के साथ भेजें, every single one. And you have the, अगर आप elections करवा सकते हैं टीचर्स के साथ, तो आप census क्यों नहीं करवा सकते टीचर्स के साथ, और health workers and lady health workers and family welfare workers and lady health visitors. आपके पास कमी नहीं है सरकारी स्टाफ की. So he says, sorry madam, हमारा तो सिर्फ एक होता है, टीम तो होती नहीं, आपको ये नहीं पता? मैंने कहा जी मुझे पता है, बट दिस इज़ नॉट फॉर द रिकॉर्ड. आप मुझे किसी मजहबी किताब, आई रिफ्यूज़ टू यूज़ वन होली बुक का नाम, आप मुझे show me one religious sacred text which says that enumerators shall be going in teams of 1 and male only. Okay, so the recommendation is increase the number of enumerators to 2 persons per team, and mandatory 1 shall be a woman, so that at least the women of Pakistan and the girls of Pakistan and the transgenders of Pakistan and the girls living with disabilities of Pakistan shall be counted in 2022. Thank you.